Okay, students, welcome. Semester 3, Core 5. Look at the book. Here the topic: Comparative Politics and Comparative Government. What is the difference? Let us know this in English and Odia. See, this is a political science honors paper. It's a very important concept. You must know the difference between these two. The point of focus. First, comparative politics. What does it study? It studies the political system. It studies the political behavior. It studies the political process in multiple countries or states. Okay. Today, in the stage of globalization, political globalization, comparative politics and comparative government is a current topic of debate. So, the focus point number one is that it studies about political behavior and system. What? Politics means. Comparative politics means. But comparative government is a different thing. Government consists of three organs: legislature, executive, and judiciary. It's all about political institutions and study of political organizations, structures, functions. But that is political system behavior. Politics, comparative politics is all about the behavior, political process, political system. But comparative government is all about the structure and function of all governments, multiple countries' governments put together. This is the first point. Second point, scope. Think about the scope. If you look at the scope of comparative politics and comparative government, which one is bigger? Comparative politics is wider than comparative government. Right? Politics is a bigger area of study and government is a small area of study. It's a part of that. So it's whole. Comparative politics is whole total study and comparative government is a part of it. Know the difference number two. Then move to difference number three. So in three, we are focusing on the approaches. Means Pathana Paddhati. Approaches means Pathana Paddhati. If you think of this point of view, you will find one thing, that in comparative politics, we often study qualitative aspects, right? But in comparative government, we study about quantitative contents. I hope you understand. One is qualitative, another is quantitative. What point of view? What point of view? So this is the third point. The fourth point is the level of analysis. If you think about the level of analysis of the both, you will find that comparative politics examines politics at various levels, local to global. Local to global. Analysis includes. In government, what we do? Focus on the national level. So level division here. One is international level, comparative politics, another is national level, comparative government. Fourth point is over now. That is analytical point of view. And the fifth one is what are the key concepts they deal with. Comparative politics includes political culture and legitimacy. Okay? And power sharing. But comparative government studies about sovereignty, federalism, separation of power, these concepts. It's inside story. That is outside. Okay? Outside means that complex system, that is political culture, you have to study. Legitimacy means legal things you have to study there in comparative politics. But in comparative government, we study about three organs and relating to their separation of power: legislature, executive, judiciary.
ओके মানে আর বিষয়বস্তু তার বিষয়বস্তু পুরা ভিন্ন অটে কিন্তু বিষয়বস্তু ভিন্ন হতে বলে এটা রাজনৈতিক সংস্কৃতি আইনগত বিধিবিধানକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ କ'ଣ କମ୍ପାରେଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସ ମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଆଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ସରକାରରେ କ'ଣ ହୁଏ ସଂଘୀୟବାଦ ये जो तुम तीन टा अंग अच्छी व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका मध्य क्षमतार बंटन केमती जिन सब तुम अध्ययन कर जदि स्कोप बोले परिसर आड़ को जीव तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोले तुलनात्मक राजनीतिर परिसर कंपैरेटिव गवर्नमेंट बोले तुलनात्मक सरकार परिसर ठारू बहुत बड़ कहीं पॉलिटिकल प्रोसेस पॉलिटिकल बिहेवियर ये सब स्टडी हम कौटी तुलनात्मक राजनीति आ सरकार सरकारी अंगर कार्यक्रम विषय तार स्ट्रक्चर आ फंक्शन इत्यादि को स्टडी करवा मेथडोलॉजी की चलो सिक्स्थ पॉइंट इज अबाउट मेथडोलॉजिकल डिफरेंस नाउ सी दिस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडीज अबाउट द हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड प्रोसेस इन द पॉलिटिक्स बट गवर्नमेंट रे कौन होची ऑफन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो मेथडोलॉजी ओके Then if you go to the next point, point number 7, goal point of view. Goal माने लक्ष्य बा उद्देश्य दृष्टि जो देखिबा बेले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रो एम कोन बेले ये पॉलिटिकल फेनोमेना डिफरेंसेस कोन सिमिलरिटीज कोन गुड कांसेप्ट भीतर स्टडी करबो राजनीति रे पर पॉलिटिकल सिस्टम भीतर सिमिलरिटी व्यवस्था भीतर समानता वो वैषम्य को अध्ययन करे आर लक्ष्य सेटा गोल माने आ कंपैरेटिव गवर्नमेंट रो लक्ष्य कोन देखो से कहूँ गवर्नमेंट गठन और कार्यावली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस को देखियो प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन रो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सहित से बेस करिवो आर गोल ऑफ स्टडी एति तार गोल ऑफ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू देखियो थ्योरी दृष्टि देखियो बेले आर डिफरेंट थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म institutionalism are the concepts of comparative politics and comparative government theories कौन बोले federalism presidentialism parliamentarism means form of government जो parliamentary form of government presidentialism presidential form of government federalism this system government comparative government रे संघीयवाद राष्ट्रपतिवाद प्रधानमंत्रीवाद बा संसदीयवाद तो अध्ययन को आसता है किंतु तुम जो देखियो पॉलिटिक्स भितर कौन आसे डिसीजन मेकिंग अनुष्ठानिकवाद राइट तापरे गठनात्मक गठनमूलक वाद ये सब जाक आइब वाद जाक हूँ कनसेप्शंस ओके बोले थ्योरीज कौन कौन स्टडी कर चलो ए 9 नंबर पॉइंट को जा केस सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो देखिए केस बेस्ड ये बेसी थियोरिटिकल एंड डाइवर्सिटी बोले कौन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टा तुलनात्मक राजनीति जोटा ये बेसी तत्वभित्तिक अटे प्रैक्टिकल नुहे किंतु गवर्नमेंट जोटा है कंपैरेटिव गवर्नमेंट तुलनात्मक सरकार इज वेरी प्रैक्टिकल it brings the differences and similarities between almost all the organizations of the government overall आमे देखिबा गले 9टा पॉइंट नंबर 10 जो देखिबा पॉलिसी रिलेवेंसेस बोले नीति निर्धारण दृष्टि जो देखिबो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्रोवाइड्स इनसाइट्स फॉर पॉलिसी मेकर्स on political process, institutions, behavior, system, etc. कौन एटा नीति निर्धारण रे जो माने थिबे माने एग्जीक्यूटिव माने कार्यपालिका मानकर बिहेवियर आ से देशर पॉलिटिकल प्रोसेस पॉलिटिकल सिस्टम इत्यादि को अध्ययन करिथाए किंतु गवर्नमेंट भितर को कंपैरेटिव गवर्नमेंट बोले कौन तुलनात्मक सरकार रे पॉलिसी रिलेवेंस केमती अच्छे देख ऑफर गाइडेंस ऑन डिजाइनिंग एंड रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स तो प्योरली वन डिफरेंस यू कैन मार्क ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज ए सिस्टम कैच दिस पॉइंट सिस्टम
Okay, and comparative government is an organization or institution आर structure and function आर गठन और कार्यावली को लेकर प्रत्येक इंस्टीट्यूशन को स्टडी करवाटा होची तुलनात्मक सरकार आउ राजनैतिक व्यवस्था प्रणाली बिहेवियर व्यवहार या को स्टडी करवाटा होची कोन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तेणु कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टा क्वालिटेटिव बाय नेचर yes invisible thing को ये स्टडी करिवो बट कंपैरेटिव गवर्नमेंट टा विजिबल बाय नेचर स्ट्रक्चर देखो ए गुड जिंस अछि बोला स्ट्रक्चर अछि आर स्ट्रक्चर अछि बोला आर फंक्शंस थिबो हो कि नहीं ठीक सिंपली गवर्नमेंट रो गुटे स्ट्रक्चर अछि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी ये स्ट्रक्चर केमिति अछि अमेरिका रे अलग अछि इंडिया रे अलग अछि चाइना रे अलग अछि जापान रे अलग अछि जे अलगाटा कोन सिमिलरिटीज ता कोन कार्यक्रम चाल फंक्शंस तांकर फंक्शंस आमर फंक्शंस आइडियोलॉजी एक्टिविटी बिहेवियर पॉलिटिकल सिस्टम समान के नहीं ये तो डिफरेंसेस हमें कैलकुलेट करते सेटा कंपेयर करते तेम सेटा कंपैरेटिव हे गेला सेटा गवर्नमेंट विषय रहले कंपैरेटिव गवर्नमेंट ओके सेटा पॉलिटिक्स विषय रहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तो ये थिला ओवरऑल 10 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोले तुलनात्मक राजनीति एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट तुलनात्मक सरकार थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग